Hello Libra, welcome to my reading. Uh, I'll be doing your love reading. This reading will consist of uh, your love life, your partners, yours. The overall theme will be of this reading. It will be of love, relationship, whether you're attached to someone mentally, spiritually, emotionally, physically, then also it will validate. Even if you're in no contact zone, then also it will validate. So you can watch accordingly, and you can watch it through your sun sign, Libra sun, Libra moon sign, and Libra rising sign, and Libra Venus sign. Since Venus is the goddess of love, since it's a love reading, so it is applicable as Venus uh, love sign also, Venus sun sign also. If Libra is your, if Venus is placed in your birth chart uh, in a Libra sign, so that's the case. So you can watch accordingly, and you can take it as a guidance, certainly, because we all need to empower ourselves and our partners and the people in general. So take it as a positive guidance from the universe, angels and fairies. I'll be using 4 multiple decks. Well, this decks consists of, this is the card of, as you can see, it's a love oracle card. First deck. Second deck I'll be using of romance angels oracle deck. The third I'll be using the true emotions oracle deck, and the fourth I'll be using fairies oracle deck. So you will get all the guidance from the universe as and when needed. So have trust and faith in this reading, and trust and faith in yourself and your partner and your love life in general. So welcome to my reading. Let's start with your reading. It's a bi-monthly reading starting from 1st of September to 15th of September. Universe, please guide the Libra people, Libra zodiac, and their partners in their love life. Please let them know what they need to know, and what kind of changes do they need to enhance and bring in their love life in order to enhance and improve their love life. Please let them know, universe. Please let the Libra people know, and their respective partners also. Please guide them. Okay, I'm done with shuffling. This is the card for feelings. Next is intentions, as you can see, and next is the card of action. Libra people, this could be your side, because it is, this kind of reading is done in both ways, I mean in both sides. This is your side and this is your partner's side. Keep this in mind. The roles can be reversed, the energy can flip, since it's a love reading, consists of 2 people. So it can also happen that Libra zodiac sign, this could be your zodiac sign, this could be your reading, Libra people, and this could be your partners. So either way, take it as it resonates with you. You can flip the energies. It's just a matter of flipping the energies and role reversal. That's it. Okay, so let me start with your reading. Okay, the first message is, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress.
Go with the flow, you will be surprised where it leads. Libra people, the message that has come out for you, maybe you are resisting something, some kind of change or transformation which is required in your life for your own betterment, which is required in your love life specifically, since it's a love reading. So don't resist change, because when we resist change we create unnecessary stress. एक बर्डन जैसा क्रिएट हो जाता है, दबाव पड़ता है सर पे, माथे पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर क्रिएट होता है दिल पे, शरीर पे, you know, that stress hormone known as cortisol, it releases then. So sorry, don't do that. Don't do that. Let it flow smoothly. Let your love life flow smoothly. Don't try to control anything, any situation, or any person. Controlling is certainly not a good habit. So don't control anyone. Let it flow gradually and smoothly. Let it take its natural course. Don't resist, because when we resist change, we resist the natural flow of life. Change is the only thing that is constant. You must have heard this proverb. So do the needful accordingly. Don't try to block that change. Otherwise, you will create blockage of energies or blockages in your life. So let it flow. Remove that resistance that you're having inside you or inside your mind that you're thinking of. So when we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Trust in the process of transformation, trust in the process of change, and hence you will be surprised that where it leads. Obviously, you will have a beautiful after effect after this change or transformation is done. Let me see what the angels have to say. Children. Your love life is being affected by children. If it is so that your love life is being affected by your children, it could be for various reasons. You must be knowing better than me what is your personal reason in your personal life. So if it is for children, because angels are saying your love life is being affected by children, if it is so, then the message I have already mentioned, you need to let it flow. If because of something, because of any particular reason, children are creating hindrances in your love life, you know, at times it does happen. At times it does happen. If children are creating hindrances in your love life, समय नहीं मिल रहा अपने पार्टनर को देने के लिए, क्योंकि बच्चों के पीछे बहुत टाइम चला जा रहा है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, ऐसा होता है. दिस आर प्रैक्टिकल थिंग्स, ऐसा होता है फैमिली लाइफ, लव लाइफ में ऐसा होता है. सो if you have children and if you're facing this kind of problem, then don't resist the change. कोई सल्यूशन निकालिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के बारे में सोचिए कि क्या करने से आप अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ वक्त बिता सकते हैं एक साथ. सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर ही पूरा फोकस अटेंशन मत डालिए, अपने लव लाइफ के ऊपर भी फोकस अटेंशन डालिए. दिस इज़ व्हाट एंजल्स हैव टू से. Okay, let's move on to the card of intentions. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Certainly, friendship is the foundation of any damn relationship, be it husband-wife, be it parents, be it children, be it colleagues, anything. Friendship is always a foundation of any relationship. It is the base layer of any relationship, you know. तभी जाके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो पाएगा या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है. अपने बच्चों से एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए.
सिंस चिल्ड्रन, द पॉइंट ऑफ चिल्ड्रन हैज़ कम आउट इन दिस कार्ड, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए. मे बी उसका उल्टा असर पड़ रहा है आपके लव लाइफ में. आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ झगड़ा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है. सो create a beautiful and harmonious relationship based on friendship with your children as well as with your life partner, be it your husband or your wife. Let me see what the angels have to say. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Ask for support and accept support from others. So यहाँ पे कहा जा रहा है, angels are telling you, let your friends help you. देखिए यहाँ भी friendship आया, यहाँ भी friends की बात आई. So certainly these are related things. All these are related things. So let your friends help you. कुछ अगर आपके दोस्त हो, अच्छे दोस्त जो दोस्त कहलाते हैं, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे मशवरा लीजिए, डिस्कशन कीजिए, देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, सलाह लीजिए उनसे. क्योंकि कभी कभी हम लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम लोग को पूछना पड़ता है, किसी और के साथ डिस्कस करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस भी मिल जाता है तब जाके, जो खुद के दिमाग में शायद ना आया हो. कभी कभी ऐसा भी होता है, isn't it? सो अपने फ्रेंड्स के साथ ये अपना प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे बिकॉज ऑफ दिस रेस्पेक्टिव इश्यूज. आस्क फॉर सपोर्ट फ्रॉम देम, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम देम एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड व्हाट दे गाइड यू. एक्सेप्ट देयर गाइडेंस, टेक इट एज अ गाइडेंस. ऐसा नहीं कि सुने और फिर चल दिए, गाइडेंस सुने और चल दिए, ऐसा मत कीजिए. उनको सुनिए, उनको समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे बोलना चाह रहे हैं, क्या करना होगा आपको, इसको समझिए, एनालाइज कीजिए, तब जाके नेक्स्ट स्टेप लीजिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन का मेंशन किया हुआ है फर्स्ट कार्ड में. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एक्शन कार्ड. Twin flames, your passion ignites. Twin flame, let me tell you, अगर आपको पता ना हो कि twin flame क्या होता है, twin flame होता है एक सोल का दो हिस्सा. सोलमेट अलग होते हैं, ट्विन फ्लेम अलग होते हैं. सोलमेट शायद कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, लेकिन ट्विन फ्लेम्स, ट्विन सोल्स भी बोला जाता है, जो एक ही सोल का हिस्सा होता है. ये सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी चुने हुए लोगों के साथ होता है ऐसा. एक सोल का दो हिस्सा, इसीलिए ट्विन नाम रखा गया है. ट्विन सोल भी बोलते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी बोलते हैं इसको. ज़रा गूगल में रिसर्च कीजिए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में. ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स. ओके, लेट्स सी what, because twin flames relationship are very magnetic, very electrifying, very passionate, full of energetic vibes. ये सोलमेट से अलग होता है थोड़ा. सोलमेट के साथ भी डीप बॉन्डिंग होता है, डीप बॉन्ड होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का और भी उससे उम्दा है, बिकॉज एक ही सोल का दो हिस्सा है. लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू से. दिस कुड बी द वन. जिनका चिल्ड्रन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे, वो सल्यूशन आपको मिल चुका. जो फ्रेंडशिप एज अ रीज़न प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, हमेशा हस्बैंड वाइफ या लवर्स या सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, ऐसे से काम नहीं चलता है. ऐसे लव लाइफ नहीं आपका सही तरीके से चल पाएगा, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ द बॉटम लेयर ऑफ एनी रिलेशनशिप. सो डेवलप दैट बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. शेयर कीजिए सब कुछ अपने पार्टनर के साथ. Okay, so action card is twin flames, your passion ignites. Certainly when it's twin flame, your passion will certainly ignite. The angels are saying this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. If you're in a doubt that whether he or she is your twin flame or not, or soulmate or not, this could be the one. That could be very much your twin flame.
या फिर सोलमेट भी हो सकता है, मीनिंग द बॉन्ड विल बी वेरी वेरी डीप। इतना इंश्योर मैं कर सकती हूँ, बिकॉज सिंस दिस कार्ड हैज़ कम आउट and this card has come out of twin flames. See, this is the card, and this is the card of romance angels. Love oracle and romance angels oracle. So since twin flame, we are talking about twin flames, angels are guiding you. Yes, this could be your twin flame or your soulmate. See, just now I have mentioned about the twin flames on this side. Okay, so let me just check out what the other side has in store for you. Well, Lover's Oracle deck says soulmate. Soulmate. See how it's related. I have even spoken about the soulmate also. So, it's the card of soulmate. You can see soulmate. It says your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So it's the time of Libra people. It's the time of twin flames and soulmate meeting. If you have or have not met yet anybody in your life with whom you feel a deep bond, so it's time that you're meeting your soulmate. My goodness, see, the angel card is also a soulmate card. This is also a soulmate card, so it's double confirmation that he or she is a soulmate of your life. Your partner is your soulmate, because both these cards, they depict of soulmate. Do you see? You're getting a mirror image, never mind. So it could be that you have met him or her physically, or else it could be in spirit also, because we are spiritual beings, so spirit plays an important role in our life. So सिर्फ फिजिकल किसी से मिलना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, स्पिरिट में भी मिलना ज़रूरी होता है, तो स्पिरिट में भी मिला जाता है. So soulmate, your soulmate is already with you in spirit. This is what the card is saying for you. Believe this and they will manifest physically. You have to believe this. You have to put it in your belief system, in your mind, in your thoughts. Only then it will manifest physically. Only then it will manifest physically. मैनिफेस्टेशन के ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं अगर चाहे तो, कि कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है, कैसे होता है. व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज़ जो हम लोग ड्रीम्स से रियलिटी में लाते हैं. और वो कैसे करते हैं? अपने थॉट्स के ज़रिए करते हैं. अपने थॉट्स को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में लाते हैं. फिर वहाँ से जाके मैनिफेस्ट होता है आपका कोई चीज़ जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आपका ड्रीम्स है, वो जाके रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है, फ्रूशन में आता है. सो सर्टेनली it's a double confirmation. The angels are saying soulmate. Yes, this is your soulmate. This is your soulmate. So be rest assured that he or she is your soulmate. If you're feeling that way, if you're questioning whether he or she is my soulmate or not, yes, he or she is certainly your soulmate, because it's a double confirmation from both the cards. Okay, let's move on to the card of intentions. Trust. The card of intention says trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. कोई भी चीज़ को you need to accept it first. Without acceptance कुछ भी manifestation possible नहीं होगा. Accept कीजिए, उसके बाद उसको transform कीजिए through your manifestation, through your thoughts. So transformation occurs through acceptance.
वंस यू एक्सेप्ट योर करेंट सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में पर्टिकुलरली, सिंस इट्स अ लव रीडिंग, वंस यू एक्सेप्ट योर करेंट सिचुएशन, it will automatically transform. So acceptance is very, very necessary. It's a crucial part of our thought process. Accept the situation, accept your present condition. Only then the next step will be transforming it or changing it. Let's see what angel has to say. New love. A new person has stirred your romantic feelings. So this person could be very well your new love. You have met someone, you have met him or her recently. So that's why this new love message is conveyed by the angels. So it could be a new love for you. You have met a new person and he or she has stirred your romantic feelings. You're feeling very romantic towards that particular person, towards her or towards him. So you have to trust this process, trust this process of change, trust the process of transformation. For that you have to accept new love. जिससे आप मिले हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या यही सही इंसान है, तो उसके लिए you need to trust. You need to trust that person, you need to trust your feelings, you need to trust your own self. So here's a new person entering your life. It could be that he or she has already entered your life or is about to enter into your life. It could be either way. So this was about the intention. Let's move on to the action card. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. When it comes to the matters of heart, there is no right or wrong. दिल के मामले में कुछ सही गलत नहीं होता है. प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं. Every choice you make expands your understanding of life and love. Every choice that you make, it expands your understanding, you know. हम लोग का limiting beliefs बढ़ता है, फिर limited नहीं रहता है. We grow, we grow. When we face certain things, certain problems, certain situations in our life, we grow as a person, as a human being. We grow emotionally, mentally, spiritually. We grow, and that is the natural process of our existence, of our life. So it expands your horizon, it expands your understanding. Limiting belief से आप और भी broaden करते हैं अपने understanding का जो horizon है. And understanding of what? Understanding of life and love. Okay, the angel says, angel messages, codependency. Addictions are affecting your romantic life. आप में से, लिब्रा बहुत जने होगा, तो ये ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे सबका अलग अलग स्टोरी हो सकता है. टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू. सो फॉर सम लिब्रा इट कुड बी अ कोडिपेंडेंसी इशू. एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. कोडिपेंडेंसी क्या होता है? ऑब्सेसिव रहना, एडिक्टिव रहना अपने पार्टनर के प्रति, ऑब्सेशन, कंट्रोल इश्यूज, ईगो इश्यूज, एडिक्शन इश्यूज, ये सब इश्यूज कोडिपेंडेंसी कहलाता है. बहुत ज़्यादा निर्भर करना, स्पेस ना देना एक दूसरे को, ये सब डिपेंड करता है. ये सब कोडिपेंडेंसी, दैट यू आर क्लिंगिंग ऑन टू दैट पर्सन. सो डोंट क्लिंग ऑन टू दैट पर्सन. डोंट क्लिंग ऑन टू दैट पर्सन. खुद को भी स्पेस दीजिए, दूसरों को भी स्पेस दीजिए, अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिए. ओके, सो इफ देयर इज एनी इशू रिलेटेड टू कोडिपेंडेंसी इन योर लाइफ, दैट इज an issue of obsession or addiction. प्यार ऐसे नहीं होता है. Love is not like that. Love is never obsessive. Love is never addictive. Love is giving space to someone. Love is having that calmness within you. Love is providing that calmness and comfort to your partner.
feeling peaceful about it, feeling peaceful about your love life. Love is all about this, not about codependency. खुद को भी लव कीजिए, बिकॉज सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने पार्टनर को भी लव कीजिए, तब जाके आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा. सो when it comes to the matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So अपने दिल से सोचिए, अपने दिल से डिसीजन लीजिए, दिल से बात कीजिए. को डिपेंडेंट मत रहिए एक दूसरे के प्रति. को डिपेंडेंसी लीड्स टू ऑब्सेशन, एडिक्शन. यहाँ पे साफ लिखा गया है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. दिस इज़ वॉट एंजल हैज़ टू से. सर्टनली ऑब्सेशन रहेगा, एडिक्शन रहेगा तो इफेक्ट तो करेगा ही, इजंट इट? सो bring that change which has been asked here. Bring that transformation. Trust that transformation. Okay, now I'll be moving on to True Emotions Oracle deck to see the overall outcome of your relationship. Take it as a guidance. Excuse me. These are True Emotions Oracle deck. One second, I will shuffle. Okay, so let's pick up a True Emotions Oracle deck card. Now I'll be picking up a card from the Fairies Oracle deck. Let's see what the fairies have to say and guide you. Okay. Well, this card says, let's forget the past and start a new journey. This card says, let's forget the past and start a new journey. This is True Emotion Oracle deck. Believe in magic. This is what fairies have to say. Believe in magic. There must be some situation in your love life which is asking you to forget the past and start a new journey. It could be any related problems that I have mentioned out here through my overall reading. It could be the problem of codependency. It could be the problem of children not having time for your partner or for your wife or husband, for your spouse. So any problem could be there. So let's forget the past and start a new journey. If you have had faced any problems in your past, do forget that and start a new journey, because transformation की भी बात आई थी यहाँ पे, change की बात आई थी यहाँ पे. So you need to transform. You need to go with the flow. Don't resist that change. Forget the past and start a new journey. Well, what the fairies need to say: believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights say, you are part of nature, so you are magical too.
This is your card, Libra people, from the Fairies Oracle deck, and the Fairies guidance is believe in magic. भरोसा कीजिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रस्ट कीजिए अपने चेंज पे, डरिए मत, डोंट बी स्केर्ड। यू नो, हम लोग कभी कभी डर जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा, वैसा करे तो क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, हम लोग सोचते हैं ऐसा ना, ये आप लोग के साथ भी होता होगा। So what you need to do is you have to trust the process of change, you have to trust in yourself, you have to trust your partner, you have to trust the entire process presented by the universe. Universe को trust कीजिए, तभी जाके आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। अपने बिलीफ सिस्टम में वो ट्रस्ट लाइए। अगर बिलीफ सिस्टम में ट्रस्ट ना हो तो कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो अपने बिलीफ सिस्टम में ट्रस्ट लाइए। बिलीव इन द मैजिक। यूनिवर्स जो मैजिक आपको दिखा रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आपके जीवन में चल रहा है या चलने वाला है या चल चुका है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। वॉक ऑन दैट पाथ विथ अटर बिलीफ। बिलीव दैट पाथ, बिलीव इन दैट मैजिक। Open your eyes and see the magic that is all around you. अपनी आंखें खोलिए, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत चेंजेस, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे। अपने अंदर भी अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे, सिर्फ बाहर ही नहीं। आंखें खोलिए मतलब लुक इनटू योर ओन सेल्फ, लुक डीप डाउन, डीप इनसाइड। और आसपास भी अपने पार्टनर को भी देखिए नए तरीके से, नए नज़रिया से। So open your eyes and see the magic that's all around in the nature, present in the nature. Nature में बहुत magic है. Nature is great. Nature has great healing potentials. So the fairy of the northern light says you are part of nature, so you are magical too, because we are all part of nature. We are all part of this beautiful universe. So we can manifest magic actually. ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स से यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, यू आर ऑल्सो मैजिकल टू। जैसा नेचर मैजिक दिखाता है, वैसा आप भी, आपके अंदर मैजिकल एट्रीब्यूट्स, मैजिकल एलिमेंट्स हैं। और ये इसी बात को कंफर्म करता है कि आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफॉर्म, जस्ट ट्रस्ट इज़ नीडेड। अपने दिल से सोचिए, सोच के देखिए, आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे और मैजिक क्रिएट होगा आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच लिब्रा पीपल। होप you like my reading, enjoy my reading. Do check out on manifestation video on my YouTube channel, and wish you all the very best for your love life. Take care. Bye bye. See you again in my next video.